It is the plant kingdom. Okay, so plant kingdom, क्लास 11 बायोलॉजी है, लेक्चर 1 आज हम आज के लेक्चर में हम ट्राई करेंगे इसको कंप्लीट करने की। ठीक है, तो ये चैप्टर 3, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, सो बच्चों यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे, इन प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रीवियस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर। Okay, जो 5 kingdom classification by Whittaker in 1969, where he suggested the 5 kingdom classification, which are Monera, Protista, Fungi, Animalia, and Plantae. What are these? Monera, Protista, Fungi, Animalia, and Plantae. Already we have discussed Monera, Protista, and Fungi. Okay, Monera, Protista, and Fungi we have already discussed. In this class we are going to discuss about Plantae. Okay, so in this chapter we'll deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom. What is Plantae? Plant kingdom. So classification of a plant kingdom. Come to the classification of a plant kingdom. So various classification has been done. Okay, so first classification we are going to discuss about artificial system. What is it? Artificial system. So in this system the classification is based on few morphological characters. तो यहाँ पर क्या हुआ था, आर्टिफिशियल सिस्टम में फ्यू मॉर्फोलॉजिकल बॉडी स्ट्रक्चर को लेके क्लासिफाई किया गया था। ओके, द थियोपास्टस, प्लिनी and Linnaeus used an artificial system of a classification. Okay, जो साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किए हैं वो लोग हैं थियोफास्टस एंड प्लिनी एंड लिनायस। ओके, then neutral system of a classification. So what is a neutral system of a classification? In this system the classification is based on all the important related characters. So neutral system की अगर बात करें, in this system the classification is based on all important related characters. जितने भी सारे important related characters है, both external and internal, यहाँ पर both external और internal को emphasize दिया गया है in neutral system of classification. Okay, so Bentham and Hooker, okay, and Adamson and Candoll used a natural system of a classification. So if न्यूट्रल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जो साइंटिस्ट यूज किए हैं उन लोगों का नाम है हुकर, एडमसन, कैंडोल। ओके, यूज ए नेचुरल सिस्टम ऑफ न्यूट्रल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. So it is based on both external and internal characteristics of an organism. Then come to the phylogenetic system. Okay, so what is the phylogenetic system? Classification based on evolutionary relationship of plants. Plants के बीच जो evolutionary relationship, okay, classification based on evolutionary relationship. What is the meaning of evolutionary relationship? Generation change. Okay, so generation by generation. So the use
Phylogeny for classification was done by Eicher, Blasi, Whittaker, Engler, and Prantwan and Hawkinson. So ये लोग इस फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज किए हैं. देन इस फाइलोजेनिक सिस्टम को अगर हम डिस्क्राइब करें तो यहाँ पर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी देखने को हमें मिलता है. जो यहाँ पर आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है? व्हाट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मेथड्स. तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स पर जो टैक्सोनॉमी बेस्ड होगा विथ इक्वल इंपोर्टेंस यूजिंग कंप्यूटर को यूज करके, स्टैटिस्टिकल मेथड को फॉलो करके जो टैक्सोनॉमी बनाया गया होगा उसे हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बताते हैं. देन cytotaxonomy is also there. Cytotaxonomy is also part of a phylogenetic system. What is it? Cytotaxonomy. What is it? Cytotaxonomy. So taxonomy that is based on cytology or structure of the cell. जो टैक्सोनॉमी बनाया गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल को बेस करके और क्रोमोसोम का नंबर और शेप और बिहेवियर इसको फॉलो करके जो टैक्सोनॉमी बनाया गया होगा उसे हम कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी. सो साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजी, दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजी or structure of the cell or structure of the cell. Okay, so that is cytotaxonomy. Then chemotaxonomy is also part of a phylogenetic system. What is it? Chemotaxonomy. So now we are coming to the chemotaxonomy. So taxonomy based on chemical constituents of a plant. प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको बेस करके अगर टैक्सोनॉमी बनाया गया होगा तो उसे हम केमोटैक्सोनॉमी कहेंगे. क्या कहेंगे? केमोटैक्सोनॉमी कहेंगे. इज इट क्लियर नाउ? एग्जांपल ऑफ सम केमिकल्स दैट प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्रोटीन, डीएनए. ओके, so nature of the protein, DNA sequence, taste, smell, etc. These are some chemical activities described here in your NCERT book. Okay, so that is chemotaxonomy that based on chemical constituents present on plants. Okay, so I hope this introduction section clear हो गया होगा आप सबका. Okay, सो क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट किंगडम के बारे में हम पढ़ रहे थे. ठीक है, प्लांट्स को टाइम टू टाइम वेरियस टाइप्स पे क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, देन वी आर कमिंग टू द एक्लेयर क्लासिफिकेशन. ओके, EICSLER. ओके, एक्लेयर क्लासिफिकेशन. So EICHEICHLER, eclair. The pronunciation check करते हैं. What is the pronunciation? ठीक है, so eclair classification. So the classification of a plant kingdom depending upon flowering. Okay, so eclair classification के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो eclair classification, जो eclair classification eclair ने किया था, तो classification of a plant kingdom depending upon flowering, वो फ्लावरिंग को बेस करके क्लासिफिकेशन किए थे. ओके,
सो फ्लावरिंग को बेस करके उन्होंने 2 टाइप्स पर डिवाइड किया था प्लांट्स को, दैट इज क्रिप्टोगामी एंड फानेरोगामी. व्हाट इज इट? क्रिप्टोगामी एंड फानेरोगामी. Cryptogamy and phanerogamy, that is divided into 2 parts. One is cryptogamy and another is phanerogamy. So cryptogamy, non-flowering seedless plants. Cryptogamy, जिस प्लांट पर फ्लावर नहीं होते होंगे, सीडलेस होगा. फानेरोगामी, फ्लावर प्रेजेंट होगा, सीड भी प्रेजेंट होगा. ओके फिर अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द प्लांट बॉडी, क्रिप्टोगामी इज ऑल्सो डिवाइडेड. फिर क्रिप्टोगामी को भी डिवाइड किया गया है. जो फ्लावर एंड सीड बियरिंग प्लांट्स है उन्हें भी फर्दर डिवाइड किया गया है. सो क्रिप्टोगामी इज डिवाइडेड इनटू थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. व्हाट आर दीज? Cryptogamy is divided into 3 parts. One is Thallophyta, then Bryophyta and Pteridophyta. What are these? Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. So what is Thallophyta? The plant body is thallus-like. जिस plant का body thallus-like होगा. Okay? Then Bryophyta, plant body with a root-like structure, stem-like structure. Vascular tissues are absent. So Bryophyta, plant body with a root-like structure. This plant body root-like structure होगा. Then Pteridophyta, the plant body is differentiated into 2 roots, stem and leaves. Okay. डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी देखने को मिल जाता है, एडवांस प्लांट बॉडी देखने को मिल जाता है. प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. What are these? Root, stem and leaves. Differentiated plant body, advanced plant body हमें देखने को मिल जाता है टेरिडोफाइटा के अंदर. So vascular tissue are present in so-called vascular cryptogams. Okay. So thallophytes again divided into algae, fungi and lichens. Is Thallophyta ओके जो फूड और सीड बियरिंग प्लांट्स को जो हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. थालोफाइटा इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज algae, fungi and lichens. So what is algae, what is fungi, what is lichens? We are already discussed about it. Okay, so phanerogamy is divided into Gymnosperms and Angiosperms. ठीक है. Thallophyta again divided into algae, fungi and lichens. You have to remember it. Then we are coming to the phanerogamy. यहाँ पर हम phanerogamy में हम देख रहे थे बेस्ड ऑन द प्लांट बॉडी. क्रिप्टोगामी डिवाइड हुआ था यहाँ पर थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा पर. ओके ये जो क्रिप्टोगामी था, जो नॉन फ्लावरिंग सीडलेस प्लांट्स थे. ओके क्रिप्टोगामी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. उसी तरह फानेरोगामी, फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट्स, जिसमें फ्लावर होगा, जिसमें सीड होगा, उस प्लांट्स को भी डिवाइड किया गया है. तो फानेरोगामी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. So phanerogamy is divided into 2 parts. One is gymnosperm and another is angiosperm. What is gymnosperm? Naked seed plants. जिस प्लांट का सीड नेकेड होगा उसे हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे. Then angiosperm, covered seed plant. जिस प्लांट का सीड कवर होगा उसे हम angiosperm कहेंगे. So this is the difference between gymnosperms and angiosperm. These both are part of phanerogams. Okay, phanerogams and gymnosperm naked seed and angiosperm covered seed. जिस प्लांट का naked seed होगा उसे हम gymnosperm कहेंगे, जिस प्लांट्स का covered seed होगा उसे हम angiosperm कहेंगे. Okay, so angiosperms are again divided into 2 parts. Angiosperm को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज मोनोकोट्स एंड दैट इज
one is monocot and one is dicot. So what is monocots? Okay, bearing single cotyledon, fibrous root system and parallel venation are monocots. And अगर dicots की बात करें, have two cotyledons. ओके, मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटलीडन देखने को मिलता है और डाइकोट्स में टू कॉटलीडन हमें देखने को मिल जाता है. ओके, टैप रूट यहाँ पर देखने को मिलता है, मोनोकोट्स में फाइब्रस रूट देखने को मिलता है, यहाँ पर पैरेलल वेनेशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर डाइकोट्स पे रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिल जाता है. Due to presence of a vascular tissue, the pteridophytes, gymnosperms and angiosperms are called tracheophytes. You have to remember it that due to presence of vascular tissues, जो pteridophytes हैं, ओके, जो pteridophytes हैं उन्हें हम pteridophytes और gymnosperms और angiosperms को हम कहते हैं tracheophytes. And due to presence of embryo, the bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms are called embryophyta. So you have to remember these important notes. Okay, then here is the classification table. Plant kingdom की अगर बात करें तो क्रिप्टोगामिया एंड फानेरोगामिया हम यहाँ पर देखते हैं. यहाँ पर ये फ्लावर बियरिंग प्लांट है, ये नॉन फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर बियर नहीं करता है क्रिप्टोगाम, एनारोगाम पर फ्लावर बियर करता है. तो ये क्रिप्टोगाम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज थैलोफाइटा, वन इज ब्रायोफाइटा एंड इज टेरिडोफाइटा, जो अब हम लोगों ने डिस्कस किया अभी. ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ऑल्सो थैलोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. वन इज बैक्टीरिया, algae, fungi and lichens. So thallophyta is divided into 4 parts: bacteria, algae, fungi and lichens. Okay, phanerogamy is divided into 2 parts. One is gymnosperm and another is angiosperm. Okay, and also angiosperm is divided into 2 parts. One is monocot and one is dicot. Okay, is it clear now? So अब हम डिस्कस करेंगे algae के बारे में. ठीक है, तो प्लांट किंगडम का एक पार्ट है. ओके, दैट इज algae. Just a minute. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो प्लांट्स के पार्ट्स को कवर करेंगे, दैट इज algae. ओके, algae and one is algae, another is bryophyta, then pteridophyta, then gymnosperm
and angiosperms. So प्लांट किंगडम को हम इस 5 पार्ट में प्लांट किंगडम के अंदर हम इस 5 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. Plant kingdom is we can say that divided into these 5 parts. One is algae, one is bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, and angiosperm. Okay, so algae stands for the Thallophyta here. So algae, bryophyta, pteridophyta, and gymnosperm, angiosperm. Okay. So without taking more time, we'll start from the algae. Okay, so let's start. So algae are chlorophyll bearing, simple thalloid, autotrophic, and largely aquatic, both फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर ऑर्गेनिज्म. अगर algae की बात करें तो ये बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर में देखने को मिल जाता है. algae आर क्लोरोफिल बियरिंग, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं. ये सिंपल थालोइड ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. दे ऑकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स. ये अदर हैबिटेट्स पे भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड्स. इन जगह पर भी इन्हें देखने को दिखाई देते हैं. द फॉर्म्स एंड साइज algae is highly variable. The form and size of algae is highly variable. The sizes ranges from the microscopic unicellular form like Chlamydomonas to colonial form like Volvox and the filamentous form like Eulothrix and Spirogyra. So ये माइक्रोस्कोपिक से लेके फिलामेंटस फॉर्म्स तक ये स्प्रेड होते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ algae हमें देखने को मिल जाते हैं. तो algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. अगर इनका रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, अगर बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं. जैसे हम लोगों को पता है कि फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी डेवलप्स इनटू न्यू कलर्स. अगर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करके, the most common being the zoospore, they are flagellated. ये flagellated होते हैं and germination give rise to new plant. germinate करके new plant produce करते हैं. So sexual reproduction की अगर बात करें, sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. Okay, दोनों gametes का fusion से sexual reproduction यहाँ पर होता है. These gametes can be flagellated and similar in size. ये flagellated और सिमिलर इन साइज होते हैं एज इन क्लामाइडोमोनस जैसा. उसका फिगर में आगे आपको दिखाऊंगा. क्लामाइडोमोनस का फिगर यहाँ पर मैं ड्रॉ भी कर देता हूं जस्ट फॉर योर आइडिया. ओके, क्लामाइडोमोनस का कुछ ऐसा फिगर होता है. ओके, तो आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे इसका फिगर क्लामाइडोमोनस का. Just a minute. Okay. So
डिटेल में ये उल्टा हो गया था, डिटेल में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, कुछ इस तरह का फिगर हमें देखने को मिल जाता है। ओके, यहाँ पर न्यूक्लियस वगैरह होते हैं। ऐसा कुछ फिगर क्लामाइडोमोनास का रहता है। ठीक है, so this is the figure of a chlamydomonas. Okay, chlamydomonas. Okay, so फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। these gametes these gametes can be flagellated and similar in size as in chlamydomonas, or non-flagellated, non-motile but similar in size, okay, as in Spirogyra. Such reproduction is called isogamous reproduction. जैसे रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे आइसोगैमस रिप्रोडक्शन, जहां पर नॉन फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर साइज ऑफ गैमेट्स देखने को मिलते हैं, उसे हम आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहेंगे। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज as in some species of Chlamydomonas is termed anisogamous. अगर फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होगा जहां पर डिसिमिलर साइज, दोनों अलग अलग साइज में, दोनों अलग अलग साइज, दोनों का साइज अलग अलग होगा। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज as in some species of Chlamydomonas is termed as anisogamous. Isogamous. Okay, fusion between one large non-motile female gamete and a smaller motile male gamete. One big motile, okay, one big motile female gamete with smaller motile male gamete. Termed as a oogamous. Oogamous. Termed as okay, hope it is clear to everybody. ठीक है, तो ये था algae के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे, इस चैप्टर को खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। आज का जो भी क्लास रहा उसे आप लोग रिवाइज करें और नोट बनाएं। नोट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें। आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन इन द लिंक, यू कैन ज्वाइन थ्रू दैट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जगन्नाथ।